Hello everyone. Dear students, as you know, in previous part we have completed the poem Laburnum Top, and today we are taking the questions related to the poem. As you know, the poem is all about laburnum tree and a goldfinch bird, and it is composed by a well-known animal poet, Ted Hughes. So let's see the questions related to the poem. Write down. First question is, describe the laburnum top. Describe the laburnum top. First write down, I would like to explain it later. The beginning of the poem describes a silent laburnum tree which has no noise, movement or life. Okay, the leaves of the laburnum top are turning yellow. See, the leaves of the laburnum top are turning yellow. Its seeds have fallen. Seeds have fallen, and there is a silence. And there is a silence prevailing over the tree. देखो, describe the laburnum top, and you know the laburnum top is the title of this poem. हिंदी में क्या कहेंगे laburnum को? अमलतास कहेंगे. अमलतास. Describe the laburnum top. You have to describe the laburnum top. देखिए, the beginning of the poem describes a silent laburnum tree without any movement, which has no noise, movement or life. The leaves of the laburnum top are turning yellow due to autumn season. Its seeds have fallen and there is a silence prevailing over the tree. देखो हम जब फर्स्ट सेंटेंसेस इसके पढ़ते हैं, the laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing and all seeds fallen. तो ये डिस्क्रिप्शन बनता है इसका कि बिगिनिंग ऑफ द पोएम जो है वो एक साइलेंट लेबनन ट्री को शो करती है जिसमें कोई नॉइज, कोई मूवमेंट, कोई लाइफ नहीं है. पत्ते जो हैं वो येलो कलर में टर्न हो रहे हैं, सीड्स लगभग नीचे गिर चुके हैं और एक चुप्पी वहां पर है, प्रिवेलिंग ओवर दी ट्री. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप यू राइट डाउन. सेकंड क्वेश्चन देखिए पोएम में जो
what do you notice about the beginning? What do you notice about the beginning and the ending of the poem? Beginning तो मैंने अभी बताया आपको, the beginning of the poem. First write down the beginning of the poem describes a silent laburnum tree which has no movement, noise and life. Which has no movement, noise and life. Okay, the ending is also similar. The ending is also similar where the goldfinch flies away into उड़ करके वो चली जाती है. Goldfinch flies away into the vast sky. Okay, but the middle part, यहां से ध्यान से देखिए, but the जो बीच का पार्ट है पोएम में, the middle part of the poem shows us a totally transformed tree with the noise of young ones, compared to a machine लिख सकते हैं, compared to a machine. देखिए पॉइंट में जो सेम थॉट है वही रिपीट होंगे, क्योंकि लगभग वही बातें हम थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं लेकर के आएंगे जब कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं, क्योंकि लिमिटेड सी पॉइम है, ये स्मॉल पॉइम है. द बिगिनिंग हमने ये लिखा था पहले भी, द पॉइम डिस्क्राइब्स अ साइलेंट लबनम ट्री व्हिच हैज नो मूवमेंट, नॉइज एंड लाइफ. द एंडिंग इज आल्सो सिमिलर वेयर द गोल्डफिश फ्लाइज अवे इनटू द वास्ट स्काई. बहुत बड़े वास्ट स्काई में ये उड़ जाती है अंत इसके साथ. लेकिन देखो फर्स्ट पार्ट और सेकंड लास्ट पार्ट सेम. पहले जब चिड़िया आती है, गोल्डफिंच आती है, उससे पहले का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल स्टिलनेस का है, डेथ लाइक साइलेंस का है. लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो वहां का माहौल बदल जाता है. जो उसके यंग वंस हैं वो क्या करने लगते हैं, एक तरीके से बहुत ज्यादा चहचहाट करने लगते हैं. और जब एंडिंग पार्ट है, जब वो वापिस चली जाती है तो उसके बाद फिर से वहां चुप्पी छा जाती है. जो शुरुआत का जो फर्स्ट सेंटेंसेस है वही हम लास्ट में उसको इंगित करते हैं. द बिगिनिंग ऑफ द पोएम डिस्क्राइब्स अ साइलेंट लबनम ट्री व्हिच हैज नो मूवमेंट, नॉइज एंड लाइफ. शायद संभवतः यही सेंटेंस पहले भी लिखा था. द एंडिंग इज आल्सो सिमिलर वेयर द गोल्डफिश फ्लाइज अवे
into the vast sky. But the middle part of the poem shows us a totally transformed tree, बदला हुआ पेड़, with noise of young ones compared to a machine. बहुत ज्यादा चहचहाट वो करते हैं. तो सेकंड पार्ट, बीच का भाग जो है उसमें बहुत ज्यादा पेड़ एनर्जेटिक हो जाता है. ये इसमें हमें लिखना था. देखिए अगला क्वेश्चन. Now we are taking the next question. See, why is the image of the engine evoked by the poet? Important question. Why is the image of the engine evoked by the poet? Question देखो. Why is the image of the engine evoked by the poet? See, the poet creates the imagery, of a machine starting up when the goldfinch arrives. When the goldfinch arrives in the tree. Okay? The sudden noise and movements produced by the young ones okay, are like the starting of a machine, कह सकते हैं, like starting of a machine. The moments produced by the young ones are like the starting of a machine. The stoking of feeding, बोलो देखिए, of feeding या stoking of the engine, is actually the act of the stoking of the engine is actually the act of feeding the young ones, बोल सकते हैं. Feeding the young ones and imparting energy, इसी में आगे जोड़ दीजिए. And imparting energy and life
Write down. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमेज ऑफ इंजन, इमेज ऑफ इंजन देखिए, द पॉइंट क्रिएट्स द इमेजरी ओके ऑफ ए मशीन स्टार्टिंग अप, कब स्टार्ट होती है, व्हेन द गोल्डफिंच अराइव्स इन द ट्री, द सडन नॉइज एंड मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द यंग वन, कौन प्रोड्यूस करता है, छोटे जो यंग वंस हैं, आर लाइक स्टार्टिंग ऑफ ए मशीन. The stalking of the engine is actually the act of feeding the young ones and imparting energy and life into them. Next question पर आइए. And the question is, see, to what is movement of the goldfinch compared? See, to what is movement of the goldfinch compared? What is the basis of comparison? What is the basis of comparison? See, the goldfinch movement is compared to that of a lizard. The basis of comparison is the slick, abrupt and alert movement of a lizard. The same kinds of movement are observed when the goldfinch arrives on the laburnum tree. So what is the movement of the goldfinch compared? What is the basis of comparison? उसकी मूवमेंट को कंपेयर किससे किया गया है और उसका आधार क्या है कंपैरिजन का? आखिरकार जो उसकी मूवमेंट है उसका एक तरीके से आधार क्या है कंपैरिजन का और किसके साथ इसका कंपैरिजन किया गया है? तो आप देखोगे कि जो लिजर्ड है, जो छिपकली है, ठीक उसकी भांति ही इसमें शो किया गया है गोल्डफिंच को. द गोल्डफिंच मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ ए लिजर्ड. द बेसिस ऑफ कंपैरिजन इज द स्लिक, अब्रप्ट एंड अलर्ट मूवमेंट ऑफ ए लिजर्ड. उसका जो आधार है कंपैरिजन का वो स्लिक, अब्रप्ट और अलर्ट मूवमेंट होता है. जिस प्रकार से स्लिक, अब्रप्ट और अलर्ट मूवमेंट होता है लिजर्ड का,
उसी प्रकार से इसका मूवमेंट शो किया गया इस पक्षी का इस पोएम में। द सेम काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन द गोल्डफिंच अराइव्स ऑन द लबरनम ट्री। लबरनम ट्री पर जब ये पक्षी पहुंचता है, ये गोल्डफिंच चिड़िया पहुंचती है, तो उसका जो मूवमेंट है वो भी इसी के साथ इंगित किया गया है। आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन द समरी ऑफ दिस पोएम। आफ्टर टेकिंग these 3 or 4 क्वेश्चंस यू कैन राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम। तो आपको समरी इसकी पूरी लिखनी है और उसके बाद जो है ये क्वेश्चन भी इसके साथ साथ आपको करने। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द पोएम लबरनम टॉप। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि ब्रीफ अकाउंट बताइए, तो आपको वो कंप्लीट इसमें पूरा करना है। देखो समरी में आपको कंप्लीट इसका पूरा वर्जन देना है, आपको अपने पूरा डिस्क्रिप्शन इसका देना है शुरुआत से लेकर के लास्ट तक। और मैंने बता दिया पॉइंट इतनी है, इसमें बिफोर अराइवल, व्हेन अराइव्ड और व्हेन द गोल्डफिंच लेफ्ट द ट्री, 3 चीजें हैं। फर्स्ट, बिफोर अराइवल ऑफ गोल्डफिंच, गोल्डफिंच के आने से पहले ट्री कैसा है, आप फर्स्ट स्टेंजे में जो चीजें हैं वो लिखोगे। क्या, लबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून, येलो सितंबर सनलाइट, ए फ्यू लीव्स येलोविंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। मतलब स्टिलनेस है, देयर इज साइलेंस, जस्ट यू कैन से डेथ लाइक साइलेंस। और सेकंड में देखिए, टिल द गोल्डफिंच कम्स विद ए ट्विटिंग चिरप, a sudden startment of at a branch end, then slick as a lizard and alert and abrupt। देखो अभी इसमें आया था, यही इसके वर्चू दिए हुए यहाँ पर, slick as a lizard and alert and abrupt, बहुत ही alert, एक तरीके से slick as a lizard, बिल्कुल स्मूथ और अलर्ट इसकी मूवमेंट रहती है। सेकंड में आपने देखा ये, और थर्ड में जब ये चली जाती है चिड़िया वहां से, उसके बाद का जो डिस्क्रिप्शन है वो देना है। तो यू हैव टू राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम आफ्टर write down all these questions. So this is the poem Laburnum Dog. Thank you very much. Have a nice day.